हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। मैं मिष्टी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक पार्ट है, एक हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन में कवर किया जाता है नर्सिंग एजुकेशन में। जब आप एमएससी नर्सिंग में जाते हैं, एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं नर्सिंग एजुकेशन, एंड नर्सिंग एजुकेशन में प्रैक्टिकल जब आप देते हो तो उसमें माइक्रो टीचिंग एक मेजर रोल प्ले करती है। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि माइक्रो टीचिंग कैसे, कौन सा टॉपिक आपने चूज करना है, उसकी टाइमिंग कितनी होती है और उसको कैसे प्रेजेंट करना होता है। मैं सारा आपको जो है प्रेजेंट करके भी बताऊंगी और टाइमिंग भी बताऊंगी कि हाउ टू मैनेज द टाइमिंग एंड हाउ टू एक्सप्लेन द टॉपिक। सो प्लीज मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपको अच्छे अच्छे बेहतरीन टॉपिक्स के साथ आपको जो है आपकी नॉलेज इंक्रीज करूंगी। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, मैं आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करूंगी जो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नर्सिंग में फेस करते हैं। मैं उन प्रॉब्लम्स को बच्चे ज़्यादा ना फेस करें जो मैंने फेस किए हैं या मेरे साथ वालों ने फेस किए हैं, तो हम जो है इस चीज़ पे काम करेंगे। जब आपने माइक्रो टीचिंग का टॉपिक लेना है तो आपने सबसे पहले टॉपिक इतना छोटा लेना है जो 10 मिनट में कवर हो जाए, क्योंकि माइक्रो टीचिंग का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 10 मिनट्स होता है। 10 से 15 मिनट्स तक आप लेके जा सकते हो, बट मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में क्या है, उसका टाइमिंग 10 मिनट्स ही रखी जाती है। ना 10 मिनट से आपका टॉपिक कम जाना चाहिए और ना ही 10 मिनट से ज़्यादा जाना चाहिए। तो आपने उस टाइम ड्यूरेशन को मैनेज करना होता है। माइक्रो टीचिंग का पर्पज़ क्या होता है, बेसिकली आपको एग्जामिन किया जाता है कि आप एज ए टीचर कैसे परफॉर्म करोगे। उसके बेसिस पे आपको जो है स्कोरिंग दी जाती है। तो जब भी आप कोशिश करें, जब आप माइक्रो टीचिंग प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप ट्राई करें कि आपका जो इंग्लिश है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन द इंग्लिश, कि ये बेसिकली आपकी मतलब इंग्लिश पे इतनी पकड़ हो कि आप प्रॉपरली टॉपिक को जो है बोल के इंग्लिश में अपने टॉपिक को अपने एक्सप्लेन कर सके। इन केस अगर आप मान लो कि आपकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश में, तो आप हिंदी भी यूज कर सकते हैं, बट उसका ड्रॉबैक ये है कि आपकी स्कोरिंग थोड़ी कम हो जाती है। बट बेटर है कि आप गलत बोले इंग्लिश में, उससे अच्छा है कि आप हिंदी में अपना टॉपिक प्रेजेंट करें, क्योंकि उसके साथ आपका टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपको नहीं, आपकी इतनी फ्लुएंसी अच्छी है, आपको पता है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है या मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, तो उस टाइम पे आपने जो है इस चीज़ को यूज़ करना है। बट आप प्रैक्टिस करें कि आप इंग्लिश में ही बोलें, मैं आपको यही सजेशन दूंगी। माइक्रो टीचिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें नॉलेज होती भी है और हमें नहीं भी होती है, तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, उसका कितना टाइम होता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कितने टाइम के लिए एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ माइक्रो टीचिंग टॉपिक्स के लिए, जैसे आप निमोनिया ले सकते हैं, ट्राईएच ले सकते हैं, वर्न ले सकते हैं, पीपीएच ले सकते हैं, एपिजियोटमी ले सकते हैं, या फिर कोई भी छोटा प्रोग्राम जैसे जीएसटी की स्कीम हो गई, जीएसएस-22 स्कीम हो गई, अनीमिया मुक्त भारत हो गया। तो कोई भी छोटे छोटे टॉपिक्स आप जो चूज कर सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन हो गया, कंगारू मदर केयर हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। ऐसे टॉपिक्स चूज करें जिसका टाइम कंज्यूमिंग कम हो और आप एक्सप्लेन भी बेटर कर सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रॉपर माइक्रो टीचिंग कैसे आपने एक्सप्लेन करनी है, कैसे आपने जो है प्रेजेंट करनी है और कैसे ही आपने उसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग कैसे आपने प्रिपेयर करनी है, कैसे आपने प्रेजेंट करनी है। मैंने प्रिपेयर ऑलरेडी कर रखी है, आप इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं और मैं आज प्रॉपर आपको प्रेजेंट करके बताऊंगी कि हाउ टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन इंग्लिश इन द फ्रंट ऑफ एग्जामिनर एंड द टीचर्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद my topic is pyloric stenosis. When you start the topic, firstly introduce yourself, then start the topic. Good morning, respected teachers, and good morning, my dear classmates. Today I am here to present the topic is pyloric stenosis and presented by me. उसके बाद आप अपना नाम बोल देंगे कि आपका जो भी नाम होगा, टॉपिक का नाम बता देंगे। हमारा टॉपिक है आज का पाइलोरिक स्टेनोसिस। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हैव यू heard this topic in previous classes? Class will be explained yes or no. Yes, please stand up. Anyone in the class? Thank you so much.
start the topic. With the objective of my topic is the introduction, define the pyloric stenosis, discuss the causes of pyloric stenosis, pathophysiology, clinical features, and medical and surgical management of the pyloric stenosis. So I'm starting with the topic with the introduction. So introduction, pyloric stenosis is a narrowing of the opening between the stomach and small intestine. This is uncommon condition in the infant can trap the food in the stomach. So what is pyloric stenosis? Basically, pyloric stenosis is the narrowing between the stomach and the small intestine. So this is the which portion is basically affected in the pyloric stenosis. There is a connection between the intestine and the stomach. Stomach and intestine connection part is stenosis. Why it is stenosis? Stenosis can be present due to the hypertrophy and hyperplasia of the smooth muscle cells of the stomachs, which leads to cause the narrowing of the stomach. So next is the definition. So definition, firstly with the help of the pictures we can clear the topic. So in the normal stomach, this portion, this is the esophagus, this is the duodenum intestine, and this is the stomach. So this portion where the connection between the stomach and intestine, there are the in the hypertrophy and hyperplasia of the smooth muscle of the cells. This is the portion. So there enlargement on the increase the number of the cells, which leads to cause the narrowing in this portion, which leads to cause the pyloric stenosis. So this portion is pyloric sphincter, or this is the gastric sphincters. So when the pyloric stenosis is present, the food content cannot be passed from the stomach to intestine, which leads to cause the projectile vomitings. When the stomach is not passed to stomach to intestine, the backflow of the stomach and regurgitate the food content from the stomach to esophagus and expelled out through the mouth in the form of the vomitings. So definition, pyloric stenosis is a narrowing and obstruction in the lower portion of the stomach that prevent the food move from the stomach to intestine. It can be caused by the hypertrophy and hyperplasia of the circular muscle of the stomach. Next is the incidence. So incidence, this is a present in infant 2 to 8 weeks of the age, and the majority of persons are affected. In the male babies are more affected as compared to the female babies, and the number of the children is are affected with this disease condition 500 to 1000 live birth out of one baby can be affected with this disease condition. Next is the causes. So basis exact cause is unknown, but it may be occurred due to the genetic, environmental factors, and other factors can be responsible to cause the pyloric stenosis. So sex, it may be a male babies are more affected. In previous slide we can discuss it. Premature birth, smoking during the pregnancy, certain antibiotics, races means ki there the history in the races to pyloric stenosis, which may be a cause of the cause of pyloric stenosis. Family history, if the in case the already this disease condition exists in the family history, it may be chance to baby can get the pyloric stenosis by birthly through the genetic genes. Next is the pathophysiology. This can be explained with the help of the chart. So you can explain with the help of chart when you can explain the any other areas. Do not put this content in this slide. Next is the medial. It's okay. Next is the signs and symptoms. Also in the pamphlets, handouts, flashcards can be used by you. Next is the diagnosis. So diagnosis, basically the physical examination. Physical examination, we can feel the olive shaped mass in the right middle area of epigastric region. Pylorobarium meal x-rays to express the narrowing is present in which part of the stomach. Blood examination. Blood examination also explain the electrolyte imbalance. Blood tests which reveal the sodium level
reveal the sodium which reveal the sodium relieve the serum potassium, low serum levels, serum chloride with increased serum bicarbonate and the pH. The prolonged vomiting resulting to metabolic alkalosis. The urine specific reactivity is 1.030 due to the dehydration. So this is the olive shaped mass, and these are the 4 quadrants. So basically we can explain in the epigastric, right middle epigastric region. So this region can be olive shaped mass, can be seen in the physical examination. Next is the medical management. So in the medical management we can give the atropine. Atropine basically give to decrease the secretions. So dose of the atropine is a 0.04 to 0.225 mg per kg per day for the first 10 days. After that we can give the oral atropine for the next 3 to 4 weeks. The dose of the atropine is a 0.08 to 0.45 mg per kg per day. Continue after the IV therapy. Next is surgical management. So basically the medical management we can give to symptomatic treatment through the medical management, but the exact management is the surgical management. So in the surgical management we go for the pyloromyotomy. So in the pyloromyotomy, with the thick muscles of the pylorus valve can be cut by the surgeon, and they can be spread out. So this portion is the narrow portion, and after that the surgery can be performed. So these are the incisions, pylorus, duodenum and cut, and the suturing वगैरह perform की जा रही है इसमें. So complication, what is the complication? So complication also मैंने prepare किए in the flashcard. So explain with the help of the flashcard the time of the presentation. Summarization: today we will discuss the pyloric stenosis, definition, discussion the pyloric stenosis, pathophysiology, clinical features, medical and surgical management. So that's all my topic. After that the floor is open for any queries. So no query. Now time for recapitulation. What do you mean by the pyloric stenosis? Yes, please, Mr. This. Yes, thank you. Please sit down. So second question, what are the clinical features and diagnostic tests for the pyloric stenosis? Yes, please. Thank you so much. Please sit down. So no time for assignment. Bibliography card. तो ऐसे अपने सारी स्लाइड्स रेडी करनी है और उसको कोशिश करना है कि आप इंग्लिश में उसको प्रिपेयर करें, बच्चे एक्सप्लेन करें. मेरा टॉपिक 12 मिनट चला गया है, बट आपने कोशिश करना है कि आपने उसको 10 मिनट में ही कवर करना है. थैंक यू सो मच.